Welcome to biology class, Amit Kumar Pradhan. Hello student, how are you? And I hope all are well. And today we discuss excretion. What is today we discuss excretion, and we have already completed the diagram of kidney. Okay, this is the kidney pin shape. Kidney color is the reddish brown color and different things. Okay, and what is now we discuss what is the kidney. Outer part is called cortex. Outer part is called cortex, and inner part is called medulla. Medulla, and notch-like structure is called what is helium, and here the in the medulla one medullary pyramids present. What is in the medulla? Small pyramid like structure. What is present? Medullary pyramids present. This is the medullary pyramids. What is this? Is medullary pyramids, pyramid like structure. Pyramid, how the pyramid is formed? The giza. This is the broad in their base broad, and top is notch. Here it is the in this structure it is called medullary pyramids. This is the medullary pyramids. Here the some what is present? Tube like structure present here. This is the minor calyx, and these minor calyx joined into the major calyx. This is the minor calyx, minor calyx, and this is the major calyx, major calyx. Here in this parts, what is this what is minor calyx and major calyx to form the ureter? What is to form ureter? This major calyx and minor calyx to form what is ureter? This is the ureter. The urine collecting, urine drained in this ureter and collect into where? Thus urinary bladder. Okay, this is the ureter, and here we discuss the some nephron also present. Here the in the cortical region, cortex, in the cortex what is present? Some nephron. Nephron, what is nephron? Nephron is the structural and functional unit of kidney. What is nephron? Nephron is structural and functional unit of kidney. This is the structural and functional unit of kidney. Nephron is the structural and functional unit of kidney. Here some nephron also present in the cortex region, that is called juxtamedullary nephron and cortical nephron. Here cortical nephron also present. All parts is what is where is it is present? In the cortex present. Okay, in the cortex present. The nephron in the cortex region is called cortical nephron. This is the cortical nephron. All part is present in the cortex. It's the cortical nephron. It is called what is? It is cortical nephron. Cortical nephron. Another is juxtamedullary nephron. This juxtamedullary nephron is what is the half parts of deep into the medullary pyramids. This is called juxtamedullary nephron. What is this? Juxtamedullary nephron. This nephron is the structural and functional unit of kidney. This is the where is renal arteries and renal veins come in the helium part. Renal arteries and renal veins come and join to the kidney in the helium parts. Here the renal arteries. What is this? Is the renal arteries, and here is the renal vein. Here it is the renal vein. This is the renal arteries, and another is renal vein.
renal vein. This blood come into the kidney in renal arteries. Renal refers for kidney. Renal word used in the kidney. So renals, which arteries come into the kidney, that is called renal arteries. Which vein come into the kidney, that is called renal vein. Okay, and here we discuss pathway. What is pathway of kidney? Here the blood come and filter in the nephron, and then urine is formation. Now we discuss pathway of urine formation. Urine formation. What is the pathway of urine formation? Here first the path is the nephron, is the collecting the urine formation in nephron. This is the nephron. Here urine is formed. After nephron 2, urine passed into the collecting duct, that is the collecting duct. दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट. ये क्या है? एक नेफ्रॉन है हमारा. ठीक है, हम एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ये है हमारा नेफ्रॉन. एफरेंट आर्टरियोल और इन्फ्रेंट आर्टरियोल आता है. यहाँ पर ब्लड फिल्टर होता है. ऐसे ये क्या करता है? लूप है बहने ले. यहाँ पर ये कलेक्टिंग डक्ट है. ये क्या है? एक टोटल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है. ये क्या है? एक टोटल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है. जैसे ब्लड आता है एफरेंट आर्टरियोल. ये क्या है? efferent arteriole, and this is the efferent arteriole. Here blood is filtered. This part is called, total part is called glomerulus. This total parts is called glomerulus. Here the blood enter into the glomerulus Bowman capsule, or it is called Bowman capsule. Here this blood filter and urine collect in the, this is the collecting duct. What is this? Is collecting duct. This nephron urine is formed, then urine is collected in this collecting duct. After collecting duct, urine enter into the where? Minor calyx to urine pass to the major calyx. After the major calyx, urine pass to the where? Ureter, and after ureter, urine collect in the urinary bladder. Here urine is collect, and after urine pass to the urethra. This is the total pathway of urine. Okay, this pathway, first urine nephron is form the urine. Nephron, where is the location of formation urine? It's nephron. After the nephron, the urine is passed, moved to the collecting duct. This collecting duct to minor calyx to major calyx, ureter, then urinary bladder, then urethra, then urine is pass out. This is the pathway. Now we discuss what is here. We discuss a nephron. We discuss here nephron. What is a nephron? Nephron is the structural and functional unit of kidney. Nephron is the structural and functional unit of kidney. Nephron is the structural and functional unit of kidney. This is the nephron. Yes, this nephron. Numbers for kidney. How many numbers present for kidney? For kidney is 1 million. 1 million nephron present in this kidney. And here 1 million, what is the 1 million mean? That is 10 lakh. 10 lakh for kidney nephron present. Here consists of
Glomerulus and tubular part consist of, it is nephron consist of glomerule, glomerulus and tubular parts. Tubular parts. Where is the cup-like structure is called glomerulus. Cup-like structure is called glomerulus and tubular parts many tubes-like form. Ascending limb, descending limb, that is called. And here we top of capillaries also present. Now we discuss what is the how to urine form, how to blood form. Okay. Now we draw a diagram of beautiful heart. Okay. This is the diagram of heart. Okay, this is the diagram of heart. This heart aorta, where is this is the aorta. Aorta, the oxygenated blood flow to the here pass out, move to the body through the aorta. This is called dorsal aorta. Dorsal aorta. Here this dorsal aorta further divide into the renal arteries. You see the renal arteries. You see the what is renal arteries, and here the afferent arterioles also present. Afferent arterioles. You see the afferent arterioles further divide. You see dorsal aorta divide into the renal artery further divide to the dorsal aorta. Dorsal arteries. This dorsal arteries. Here, these arteries come to the here cup-like structure. This come to the and coil here. This is capillaries. This is afferent arteriole. What is this? Is afferent arteriole? Yes or no? This is called afferent arteriole. Already we written here afferent arteriole, and this is the efferent arteriole. Efferent arteriole. This is the efferent arteriole. Here this part, where these parts filtrate all the bloods. जैसे आपको पता है कि कैपिलरीज में एक्सचेंज होता है गैसेस, ये एट्रियोल्स आता है और कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है. यहाँ पर कप लाइक स्ट्रक्चर है, कप लाइक स्ट्रक्चर में एफरेंट एट्रियोल आता है. यहाँ पर क्या होगा कि कैपिलरीज होगा और फिर इफरेंट आर्टेरियोल जो बाहर जाता है, बायोमेन कैप्सूल से बाहर जाता है, जो एग्जिट करता है उसको एफरेंट बोलते हैं. ई फॉर एग्जिट, ई फॉर एफरेंट. ए फॉर क्या है, ए मतलब एंट्री करेगा, एफरेंट आर्टेरियोल बायोमेन कैप्सूल में आएगा और क्या करेगा, इसमें फिल्टर होके सारे फिल्ट्रेट देके ये आगे एफरेंट आर्टेरियोल इफरेंट आर्टेरियोल में चेंज हो जाएगा. ओके, दिस इज द distal convoluted tubules, further proximal convoluted tubules and distal convoluted tubules. What is this? Is the tubules. This is the tubules. Some tubules also present in the here. This is the biomain capsule. First we label it. This is biomain capsule. This is proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubules. This is distal convoluted tubule. Distal convoluted tubules. Proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, and this is the collecting duct. Okay, this is the total nephron, structure of nephron. ये पार्ट्स यहाँ पर इन्वॉल्व रहता है इस स्ट्रक्चर में. ग्लोमेरुल्स प्लस बायोमेन कैप्सूल
ये क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुल्स बोलते हैं टोटल स्ट्रक्चर को, बायोमेल कैप्सूल। हियर नेफ्रॉन मीन्स व्हाट इज ग्लोमेरुल प्लस बायोमेल कैप्सूल, that is glomerulus plus biomain capsule is called Malpighian tubules. glomerulus glomerulus plus biomain capsule is equal to Malpighian body, Malpighian body, ये है Malpighian body और it is renal corpus और it is also called renal corpus, it is also called what is renal corpus, it is also called renal corpus. Now we discuss what is nephron structure. ये था ब्लड कैसे नेफ्रॉन में आता है किडनी में, ये कॉर्टेक्स में है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, ये ब्लड एंट्री करता है और इस जगह पर रहता है। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज टोटल स्ट्रक्चर, हार्ट से ब्लड आता है यहीं पर जाता है, यहीं पर यूरिन बनता है, यहीं से आगे चलता है, दिस इज द स्ट्रक्चर। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज the structure of nephron, structure of nephron, what you see the structure of nephron, how what is the structure of nephron, this is the structure of nephron. Here collecting duct, this is the collecting duct and this is the afferent arteriole, afferent arteriole, this is the efferent arteriole, okay, this is the afferent arteriole and efferent arteriole. What is this afferent arteriole? Afferent arteriole, this is the efferent arteriole, this is the efferent arteriole and here efferent arteriole and afferent arteriole present. यार जब efferent arteriole क्या है, मोटा रहता है, अब यहाँ पर कैपिलरीज में होगा, यहाँ पर ये पतला रहेगा। जब क्या होगा कि जब वो आगे पतला वाला है हैवी प्रेशर से जाएगा तो प्रेशर की वजह से यहाँ पर जो भी ब्लड का इम्प्यूरिटीज होता है यहाँ पर सीक्रेट हो जाता है, इम्प्यूरिटीज यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, वेस्ट वहाँ पर आ जाएगा सारे फिल्टर होकर, ठीक, आगे फिर ये efferent arteriole चला जाएगा। ये है proximal convoluted tubule, what is this proximal convoluted tubule, convoluted tubules, this is the distal convoluted tubule, distal convoluted tubules and this is the collecting duct, collecting duct and this is the loop of Henle, this is what is this loop of Henle, loop of Henle, ये loop of Henle है, ठीक है। ये जाकर के आ गया efferent arteriole, what is the efferent arterioles further divides many capillaries, one come to the here and this is the ascending limb, the afferent arterioles, the afferent this is the peritubular capillaries form the afferent arterioles, ये क्या है peritubular
कैपिलरीज, कैपिलरीज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज फॉर्म द एफरेंट एट्रियोल्स। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहाँ से फॉर्म है? एफरेंट एट्रियोल से एक कैपिलरीज आया है। इस कैपिलरीज क्या कहता है कि वहाँ पर जो एसेंडिंग, दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब, एसेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब को कवर करता है। एसेंडिंग लिम्ब एंड दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब। ये एसेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब को क्या करता है? कवर कर लेता है और पूरा लूप ऑफ हेनेले को कवर करके चलता है। फिर वहाँ पर जो भी सिक्रेशन बच जाता है उसको ये उठाकर फिर ले जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आयन्स हो गया, वाटर हो गया, उसको रीएब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या करता है? उसको एस शेप का है, जो एस शेप में आया है उसको फिर रीएब्जॉर्ब करके फिर यूटिलाइज कर लेता है। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नाउ वी डिस्कस दिस यूरिन फॉर्मेशन स्टेप। ओके, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन फॉर्मेशन, ये क्या है? हमारा बायोमन कैप्सूल है। ठीक है, ये क्या है? हमारा बायोमन कैप्सूल है। यहाँ पर एफरेंट आर्ट्रियोल आया। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल के बाद क्या करेगा? यहाँ पर कैपिलरीज हो जाएगा। कैपिलरीज फिर आगे जाकर इफरेंट आर्ट्रियोल में हो जाएगा। ये इफरेंट है, इफरेंट एट्रियोल एंड दिस इज द एफरेंट एट्रियोल, एफरेंट एट्रियोल। ठीक है, एफरेंट एट्रियोल जब आता है वहां पर ये पतला है। इफरेंट क्या है? थोड़ा सा पतला, क्या है? पतला वाला ट्यूब है। तो यहाँ पर बड़ा वाला ट्यूब आएगा तो वहां पर प्रेशर फ्लो होगा तो यहाँ पर थोड़ा मतलब यहाँ पर फिल्ट्रेट होने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है कि पोडोसाइट सेल है। ठीक है, दिस इज द सम पोडोसाइट सेल है। यहाँ पर क्या है? सम ऐसे पोडोसाइट सेल, ये भी रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। क्या है ये? पोडोसाइट, पोडोसाइट सेल है, ये पोडोसाइट सेल है। और यहाँ पर क्या होगा कि 125 ml पर मिनट ये निकलेगा, 125 ml पर मिनट एंड पर डे 180 लीटर। ओके, इन द पर लीटर 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट होने लगेगा ये। ठीक है, यहाँ पर आएगा, प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होगा। यहाँ पर आने के बाद ये पोडोसाइट सेल उसमें फिर यहाँ पर जो होगा उसको फिर रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर 125 पर मिनट निकलेगा ml और 180 ml पर डे निकलेगा। ठीक है, बायोमैन कैप्सूल, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन डिस्क। ये टोटल स्ट्रक्चर क्या है? ये क्या है? एक फिल्ट्रेशन डिस्क है, फिल्ट्रेशन डिस्क है ये। एंड ये टोटल को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड बायोमैन कैप्सूल। दिस इज कॉल्ड बायोमैन कैप्सूल। इसको क्या बोला जाता है? बायोमैन कैप्सूल। जैसे हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम 70 है, ठीक है, तो 70 ml 72 टाइम होगा, तो हार्ट स्ट्रोक कितना है? 72 टाइम है। 72 इंटू पर मिनट क्या है? 70 ml ब्लड आएगा, तो कितना होगा? 72 इंटू 70 7 5040 ml पर मिनट क्या होगा? ये फिल्ट्रेशन होगा। एक मिनट में हमारा बॉडी का सारे ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाता है, किडनी में भी हो जाता है, ये फिल्ट्रेट करता है। एक दिन में 180 लीटर ये फिल्ट्रेट करने लगेगा। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज डन अक्रॉस द 3 लेयर। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन occurs 3 स्टेप और 3 लेयर्स। क्या है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट इज द कैपिलरीज, एंडोथेलियम, बेसमेंट एंड बायोमोन। कैपिलरी, कैपिलरी एंडोथेलियम, बेसमेंट, बेसमेंट जो यहाँ पर बेसमेंट है, पोडोसाइट सेल है, उसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन डिस्क। ये क्या है? एक बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट सब्सटेंस। एंड अनदर इज नंबर 4
इज कॉल्ड बायोमेंस। जो बायोमेन कैप्सूल है, बायोमेंस एपिथेलियम से फिल्ट्रेट होगा। बायोमेंस एपिथेलियम हीलियम से ये फिल्ट्रेट होगा। ठीक है, ये फिल्ट्रेशन चलता रहेगा। फिल्ट्रेट रीच इन द ल्यूमेन ऑफ बायोमेन कैप्सूल। फिल्ट्रेट कहाँ होगा? ल्यूमेन ऑफ बायोमेन कैप्सूल। वहां पर मैक्सिमम फिल्ट्रेट रीच इन ल्यूमेन ऑफ बायोमेन कैप्सूल। ओके, ल्यूमेन ऑफ बायोमेन कैप्सूल। Okay, next we discuss what is another things that is called absorption. 99 part of filtrate reabsorb। जो भी फिल्ट्रेट वहाँ पर फिल्ट्रेट हुआ है 99% वहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब क्या है कि जो भी फिल्ट्रेट निकला है, फिल्ट्रेट मतलब जो फिल्ट्रेशन होने वाला है वो क्या होगा, उसी से 99% रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज द 125 ml पर minute and 180 liter per day। Okay, and function of ट्यूबलेस, ट्यूब से कैसे फंक्शन होगा? फंक्शन ऑफ ट्यूबुल्स, फंक्शन ऑफ ट्यूबुल्स, जैसे ये क्या है, बायोमेन कैप्सूल है, पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। नाउ इट इज लूप ऑफ एनएलए। नाउ इट इज what is distal convoluted tubule, then it is the what is collecting duct. This is the structure tubules, this is the nephron, total structure is nephron. This is the what is PCT, this is the DCT, this is a loop of NLA, this is the biomain capsule, and this is the collecting duct. Okay, here the what is here reabsorb H2O, HNO3, ये सब रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में क्या होगा, वाटर ग्लूकोज 70% वाटर 70 एंड ग्लूकोज C6H12O6, जो ग्लूकोज है रीएब्जॉर्ब हो जाएगा वहाँ पर। अगर ग्लूकोज आ गया तो उसको रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। और यहाँ पर नीचे के पोटासियम, सोडियम, और ये क्या है पोटासियम, NH3, एमोनिया, एंड व्हाट इज लास्ट इज हाइड्रोजन। ठीक है, ये NH3H रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पर H2O रीएब्जॉर्ब होगा, H2O यार सेम, ये NH3NH। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बस रीएब्जॉर्ब होगा यहाँ पर वाटर H2O एंड यहाँ पर सॉल्ट NaCl एंड NaCl रीएब्जॉर्ब, मतलब रीएब्जॉर्ब एब्जॉर्ब होगा, रीएब्जॉर्ब। जब हमारा जो आएगा सिस्टम जो कैपिलरीज ट्यूबुलर्स, इससे फिर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। हियर एमिनो एसिड HNO3 क्या है, एमिनो एसिड, H2O एंड ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब इन PCT। एमोनिया एसिड, एमिनो एसिड, व्हाट इज एमिनो एसिड, ग्लूकोज एंड वाटर रीएब्जॉर्ब इन प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। PCT से ये रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ये आ गया इसमें, उसको रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, एंड 70 to 80% वाटर इन PCT, 70 to 80% H2O PCT में होगा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में। एंड इलेक्ट्रोलाइट 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट, जो आयन है 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट भी एब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ पर। ओके, एंड DCT एंड लूप ऑफ NLA H2O और सॉल्ट। DCT में H2O और सॉल्ट, लूप ऑफ NLA ओनली वेयर लूप ऑफ NLA ओनली व्हाट इज वाटर H2O और NaCl, जो H2O एंड सॉल्ट वहां पर बस होगा, पानी और
सॉल्ट आयन जो है बस रीअब्जॉर्ब होगा। एंड हियर द असेंडिंग लिम्फ परमिएबल टू सॉल्ट, परमिएबल कर देता है। जो असेंडिंग लिम्फ है ये डिसेंडिंग लिम्फ है, ये असेंडिंग लिम्फ है। जो ऊपर चढ़ रहा है असेंडिंग है और जो नीचे आ रहा है डिसेंडिंग है। असेंडिंग लिम्फ इज परमिएबल ऑफ वाटर, ascending limb is permeable to water, permeable to water, permeable to water. This is the function of tubules, this is the function of this function। इसको रीअब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर क्या आ गया हमारा एफरेंट, इफरेंट आता है, ब्लड फिल्ट्रेट हो गया। फिर यहाँ पर जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आता है, इस सारे को कलेक्ट करके ले जाता है और यहाँ पर यूरिन बच जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन का कलेक्शन हो जाता है। ओके, कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट द यूरिन एंड इट इज कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट इन द cortex। ओके, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।